Yes. So we will discuss about the names based on the nakshatras. Okay. So this is the slide. So as you can see, every nakshatra has 4 padas and every pada has a frequency, or what you say, alphabet. In Hindi, you can say alphabet associated with it, right? So, suppose if a baby is born in the Ashwini Nakshatra and 4th pada, so what should be the first alphabet of the suggested name? La. Okay. So, why it is like that? It is the ओन फ्रीक्वेंसी, ये उस इंसान की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है जो उस नक्षत्र में पैदा होता है. ओके, सो यू कैन जस्ट सी दिस स्क्रीन, देन वी कैन सी द अदर नक्षत्रास आल्सो. सो व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स वी कैन हैव बेस्ड ऑन द नक्षत्रास? जस्ट हैव अ लुक वंस. भैया इसमें एक डाउट है, लेकिन पूछो. यस. कि वो कौन से पदार्थ में उसका बर्थ हुआ, ये भी हमको सॉफ्टवेयर बता देगा? यस, हम ऑब्वियसली. अच्छा, और इसको याद नहीं रखना है ना फिर कि ये चू चे चो, मतलब ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रेफर कर लेंगे? सो सॉफ्टवेयर के थ्रू you can know the pada Ashwini 3, and from Ashwini pada 3 you can refer to this table and tell the names. Got it? And also, like if you remember, every nakshatra pada has a particular degree. Okay, so 0 degree to 3 degree 20 minute में कोई भी पैदा होगा तो that will be Ashwini pada 1. 3 degree 20 minute to 6 degree 40 minute anybody is born, Ashwini pada 2. Okay, तो just looking at the moon degree, कितने डिग्री में है मून, कौन सी राशि में. जैसे अगर टॉरस के 0 degree 30 minute में कोई पैदा हो रहा है तो what will be the नक्षत्र एंड पता. कैन एनीबडी टेल मी? टॉरस में कोई बच्चा हुआ है 2 डिग्री में, मून इज इन द 2 डिग्री इन टॉरस जोडिएक साइन. सो व्हाट विल बी द पदा ऑफ दैट बेबी, नक्षत्र एंड पदा? या रोहिणी हुआ? नो. एनीबडी एल्स? टॉरस 2 डिग्री. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद एरीज. एरीज में 29 डिग्री. एरीज में कोई 29 डिग्री में पैदा होता है तो व्हाट विल बी द नक्षत्र? भैया कृतिका नक्षत्र का पहला. करेक्ट. कृतिका नक्षत्र पहला पद. हाँ. हाउ? सो Ashwini will be till 0 to 13 degree 20 minute, right? Bharani will be till 13 degree 20 minute to 26 degree 40 minute, right? जी. And from 26 degree 40 minute to 30 degree, what will be there? Kritika pada 1. Right? Understood? Then Kritika pada 2 will be there. Taurus 0 degree to 3 degree 20 minute. आया समझ में? यस. तो एक बार दोबारा से इस टेबल को देख लो अच्छे से, देन आई विल आस्क 1 2 3 क्वेश्चंस रैंडमली ढूंढ के किसी को भी. Okay, so now somebody is born in Cancer and the moon degree is 15 degree.
So can you tell me which nakshatra and which pada he will be in? What will be the name first letter can be suggested to for that person? Cancer, 15 degree. Yes. It is pure mathematics. So let's see how strong is your maths. Ho. Pushya. Okay. Pushya and which pada? Second. Okay. Anybody else? Third. Hmm. Let me see. Pushya third. Anybody else? Pushya second, Pushya first, Pushya fourth. समझ में तो आ रहा है ना सबको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैलकुलेट होता है? आशीष, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? यार नहीं नहीं हो रहा, नहीं समझ में आया। Okay, let me share you a different PPT. So this is our sky. Okay. So as we discussed, this is 0 degree. This is the starting point. 360 degree or 0 degree, this we can say. So 0 to 30 degree, which Rashi is there? Aries. एरिस Okay. फिर उसके बाद कौन सी राशि है? टॉरस. उसके बाद टॉरस कौन सी राशि है? कैंसर. जेमिनी नहीं, फिर उसके जेमिनी। बाद कैंसर हाँ, टॉरस के बाद जेमिनी, जेमिनी के बाद कैंसर. ओके. सो आई टोल्ड अ पर्सन इज बोर्न इन कैंसर 15 degree. Okay. So just find out again. Okay, so Cancer is starting Punarvasu 4. Okay, so just check and Puras. just give me a minute. Yeah. नक्षत्र पूरा नक्षत्र 120 जो मैं ना पाया. Yes. So Cancer 15 degree, what happens? So as you can see, Punarvasu 4th pada is falling in the Cancer, right? Ashish, you are able to relate? Okay. So one pada is how many degree, Ashish? Tell me. 30 डिग्री. One pada, one step of nakshatra. 3 degree 20 minute. Okay. So one nakshatra is how many degree? 4 steps are there in one nakshatra. So how many degree one nakshatra is? 3 degree 20 minute into 4. It becomes 13 degree 20 minutes. Okay. How? 3 4s are 12 and 20 minutes into 4, 18 minutes. So 80 minutes will become 12 plus 1 minute 13, 13 degree 20 minutes. Okay. So any child born in 0 degree 3 within 0 to 3 degree 20 minute of Cancer will be in Punarvasu 4th. Then 3 degree 20 minute to how many degree Pushya will be there? Tell me, Ashish, you tell. 3 डिग्री. हाउ मेनी यू आर टोल्ड? Pushya nakshatra ending will be till how much degree in Cancer? At what degree Pushya 90 nakshatra will? 93.20. 19 point. So you just 90. imagine every sign as a 0 degree. Okay. Okay. So at what degree Pushya nakshatra will be getting over? So it will be 3 डिग्री. No, it will be 3 degree 20 minutes plus 13 degree 20 minutes. Okay, so 3 Why? degree 20.
So in Why Cancer, 13? because Pushya has 4 steps. No, I am asking at what degree Pushya will get over. Okay. Okay, so it will get over at 3 degree 20 minutes plus 13 degree 20 minutes, total 16 degree 40 minutes. So if a person is born in 15 degree, so he will be where? In Pushya Nakshatra, third pada. Got it? And if a person is born in Leo zodiac sign and 29 degree, then tell me which nakshatra pada he will be. 29 degree. So Yeah. this will be Purav Bhagini. How many degree I told? 3 degree and No, I told 12. 29 degree if a person is born. Yeah, Sanket, can you tell? भैया एक मिनट, I'm just calculating. Array, it is written in the slide. Why to calculate? 29 डिग्री होगा 13. भैया ये पूर्व फाल्गुनी फोर्थ पदा. नहीं, पूर्व फाल्गुनी fourth pada will be till 26 degree 20 minutes. There is Uttar Falguni first अच्छा pada राइट, also. हाँ 13 into 2 26. हाँ उत्तर फाल्गुनी फर्स्ट पदा. Okay. Yeah. So now next. So yeah, one more let's take, then we will see the names. So somebody is born in Pisces zodiac sign at 2 degree. Moon is 2 degree and Pisces zodiac sign. Okay, so somebody new. Let पूर्व us see. भाद्रपदा पदा. फोर्थ. No. 2 degree. See, 2 degree. Moon is at 2 degree in Pisces. अच्छा, पूर्व भाद्रपदा 4. Yeah, correct. I thought उत्तर भाद्रपदा. Got it ना? आ गया ना समझ में? 0 से 3 डिग्री 20 मिनट में कौन सा नक्षत्र आएगा? पूर्व भाद्रपदा 4. ओके, तो कोई बच्चा जन्म हुआ जब चंद्रमा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में था, तो उसका नाम किससे शुरू होना चाहिए? नाउ वी कैन सी फ्रॉम द टेबल. Yes. So where is the Purva Bhadrapada Nakshatra? This. So Purva Bhadrapada 4 will be D. D. Okay, so it is not D, it is D. So it is a difficult frequency. D से can you suggest any name? India में. दिग्विजय. हाँ. दिग्विजय. दिलीप. D हो गया ना ये D. There is a difference between D and D. पदा 3 वाले का रख भी सकते हो दिग्विजय, दा आ रहा है, लेकिन दा इज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. हाँ, एनीबॉडी, एनी नेम सजेशन फ्रॉम डी? डिगामा, जैसे बास्को डिगामा, तो दैट इज डिगामा. भैया दीन दयाल. नहीं, दी हो गया, दा नहीं, डा आना चाहिए, डा. डिंकू. डिंकू. ओके, डिंकू. दयालाल. Okay. Okay. चलो, I'll just show you one chart and you tell me कि कौन सा नाम होगा इसका. Yeah, see this chart. ठीक है, तो पहले तो tell me which nakshatra and which pada he is in born, और especially the newcomers. So Ashish, you can tell us. कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पदा है इस कुंडली में बताऊंगा. so according to moon, it is in Moon is in which number? 3, and the three is Gemini. Gemini, correct. Gemini. Okay. Gemini में कितने डिग्री पे है? 13 degree
38 minute and 19 second. ओके, सो जेमिनाइन 13 डिग्री 38 मिनट पे कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र होगा? या सो जेमिनाई 13 डिग्री 28 मिनट्स पे, या टेल मी विच राशि, विच नक्षत्र? This one nakshatra will be Aratra. वेरी नाइस, एंड पदा? 13, 3, 3, 6. Second pada. ओके, करेक्ट. सेकंड पदा will Second be pada, there. second pada, second pada. At what degree second pada will be ending? It will be ending in 13 degree 20 in 13 minutes. degree. 13 degree 20. Great. So now we will see Adra Nakshatra second pada. This is also a difficult name. What will be the alphabet? Ghansham. Ghanshyam. Okay, Ghanshyam is correct. Okay, any other name suggestion for this person? Gha. भैया घटोत्कच. Ghatotkaч. Ghatotkaч was born in Adha Nakshatra. He will be in this one. सही में? Good. Yes. Ghatotkač. He was born in Rahu ka Nakshatra. So Rahu Nakshatra is very powerful. Gurudev is also born in Rahu Adha Nakshatra. So yeah. But his name doesn't start with any of these letters. Yes, he doesn't need to start with any of this. Okay, so this was about nakshatra and names. Okay, so now let's move to the main topic for today.